Hello everyone, today we will start the exercise 4.3. 4.3 is based on the area of the triangle by using the determinants. So first question is that find the area of the triangle with the vertices at the point given in each of the following cases: 1 0 6 0 4 3 2 7 1 1 10 8. This is the second part and this is the first part. So as you know, in class 10th, when the area of triangle finding by the coordinate method, then you have to write the 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2. So this is the method, this is the coordinate method by which by this formula you can find the area of the triangle if x1 y1 and x2 y2 and x3 y3 are the vertices of the triangle is given. So in the same way you have to find the area of the triangle by using the determinants method. The determinants method, this is the formula: area of the triangle 1 upon 2 x1 y1 1 x2 y2 and x3 y. This is the coordinate and you have to write the 1 1 1 by which you can complete the order of the 3 cross 3 order. So if you are putting the value of x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and expand it, if you are expanding by the first row, then you get the 1 1 and cross multiply 0 into 1 minus 3 into 1. Similarly for the second element of the first row, so you have to write the 0 means this column and this row you have to delete, then you get this 6 1 4 1, and if you are multiplying 1 into 6 minus 4 into 1. Similarly for the third element, so you have to write the here 1, and if you are deleting the row and column corresponding to this element 1, then you get this 6 0 4 comma 4 and 3, and if you are simplifying 6 into 3 minus 4 into 0, and if you are simplifying, then you get this is the minus 3 into 1 g, that is 3, and if you are subtracting from 1, then you get the minus 3, and multiplied by 1 you get the again minus 3, and if you are multiplying by 0 in this bracket, then you get the 0, and this is the 6 is 18 minus 0, and if you are multiplying by 18 in 1, then you get the plus 18. If you are simplifying, that will be the 15 by 2, which is the area of the triangle if 1 comma 0 and 6 comma 0 and 4 comma 3 be the vertices of the triangle. So this is the determinants method by which you can find the area of triangle. Question number 2 is also similar question. So you have to find the area of the again you have to find the area of the triangle, but in this question this is given so that the given point are the collinear. So collinear, it means the area of the triangle is equal to 0. If you are getting the area of the triangle is equal to 0, so then you can say the given points are the collinear. So in the same way you have to find the area of the triangle, and if you are simplifying, then you get the 0. It means you can say the given points are the collinear. So in this case, if we are finding the area of the triangle 1 upon 2, this is the x1 x2 y2 and x3 y3, and if we are applying the c1 tends to c1 plus c2, then you get the a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, and b plus, and second column and third column, that will be the same, and you can take the common from from c1, so then you get the 1 upon 2 a plus b plus c, and we are seeing that since c1 and c3 are the same, as you know by property, if two row or two column are identical, then the value of that determinant is equal to 0. So you get the 0, and if you are multiplying by 0 in this value, then you get the 0. So since you are getting the area of triangle is equal to 0, so then you can say the given points are the collinear.
Next question is that you have to find the value of k if the coordinate of the triangle or vertex of the triangle is given. Find the value of k and area of the triangle is given. So in this question, you find the value of k if area of the triangle is 4 square units. This is 4 square units is given, and vertex of the triangle is given. So now the area of triangle is given plus minus 4. The area cannot be negative, but the value of k may be the negative or positive, but the value of k is just the negative and positive. So you have to write the plus minus 4. So in this case you have to write the 1 upon 2 in the same formula and put the value of x1 y1, x2 y2 and x3 y3, and if you are simplifying by taking the positive value 4, so then you get the k is equal to 0, and if you are taking the negative sign, so then you get the k is equal to 8, means the k is equal to 8. This is the k is equal to 8 and k is equal to 0 are the two answers for whose the area of the triangle is equal to 4 square units. Second part is also similar question, so you have to do by using again this method. Question number 4. In question number 4, find the equation of the line joining 1, 2, 3, 6 using the determinants method. So in this case, there are the two coordinates are given, and you have to find the equation of line, and so again you can apply this formula by taking the x1 y1 as a xy, and again put the value of this is the xy, this is the variable, and x1 y1 and x2 y2. Simplify, you get the equation of the line. So again you can say if you want to find the area of the if you want to find the equation of the line by using the determinants method, so you have to apply the same formula 1 upon 2 x1 y1 1, x2 y2 and 1, and x3 y3 and 1, and area of the triangle if you are getting the 0, so then you can say given points are the collinear. And if you want to find the equation of line by using the determinants, so again you have to write the first coordinate x1 y1 as a x and y, and the second coordinate is given, so that will be the x1 y1, and third coordinate is given x3 y3. So by this formula find the area of the triangle, you get the equation of line. So question number 5 is also similar. Now the exercise 4.4. In this exercise you have to find the minor and cofactor of the elements. So minor and cofactor of the elements. Minor, this is the first question, write minor and cofactor of elements. The following determinants is given. The second part is A, C, B, D, and the second part of the question number 1 is which is the 2 cross 2, whose order is 2 cross 2. If you want to find the minor of first element, you have to write the m11. M means minor and 11 means the first row, first element of the first row and first column. So if you are deleting the first row and first column, then you get the D. So this is the D. This is the minor of M11, means first element of the row and column. Similarly, the second element of the first row, here this is the A11, A12. In this related, you can write this element as a M12. It means you have to delete this row and this column, then you get the B. Similarly, M21, this is the third element. M21, third element of the third element, which is the first element of the second row. So if you are, this is the A21 and A22. So if you are deleting this
this column and this row, then you get the C. And M22 means you have to find the minor of the D corresponding to D. So then you get this row and this column can be deleted. There will be the value of M22 is equal to A. सिमिलरली को फैक्टर, तो को माइनर और को फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है. को फैक्टर को हम साइन के साथ लिखते हैं और माइनर में हम सेम वैल्यू ऐसे ही नोट कर देते हैं. तो को फैक्टर हम M11 का को फैक्टर फाइंड करते हैं. तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है. तो इसको इस तरह से लिखना है कि -1 और D मीन्स दिस इज द माइनर, दिस इज द माइनर. तो अगर हम माइनर को साइन नेगेटिव में पॉजिटिव के साथ लिखते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, को फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, को फैक्टर. इसी तरह से अगर हम A12 का को फैक्टर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे -1 + 2 M12 और M12 इज गिवन B. और इफ़ यू आर सिंप्लीफाइंग -1/3 देन यू गेट दी माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई B देन यू गेट दी -B. Similarly, you can find the third element of this determinant. So then you get the A21. A21 means -1/2 + 1, and M21. This is the minor. Minor of the M21 is equal to C is given. So you have to write the here -1/3. That will be the minus, and the value of M21 is C is given. So A21 is equal to -3. So this is the cofactor of A21. Similarly, cofactor of A22, again you can write -1/2 + 2 M22. M22 means minor of the M22. It means if you are simplifying the -4, so that will be the positive, and put the value of M22, so that is the A, and if A is multiplied with sign positive, then you get the A. तो हम माइनर और को फैक्टर में से इतना डिफरेंस रखते हैं कि को फैक्टर में हम जो है एलिमेंट का पोजीशन भी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो नेगेटिव पोजीशन पे है या पॉजिटिव पोजीशन पे है. जो को फैक्टर के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं Cij इज इक्वल टू -1/i + j Mij. I मीन्स नंबर ऑफ रो और j मीन्स कॉलम. Ij अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम कौन सा है, 1 है. मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट, और किसका होना चाहिए, सेकंड रो का होना चाहिए. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं A21, A22, A23 जो इस बेस पे फाइंड किए गए हैं. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट ऑफ द 2 का सेकंड पार्ट. Here the determinant is given. The determinant is given 3 cos 3. So first you have to find the minor of the each element. So if you are finding the minor of 11, so 11 means this row and this column will be deleted. So that will be the remaining element are 5, -1, 1, 2. You have to write in determinants form. Again M12. If you are finding the minor of M12, so then this column is deleted and this row is deleted. So then remaining element are 3, -1 and 0, 2. Again you have to write the determinant form. Similarly, you have to find the M11, M13, M21, M22, M23 and M31, M32 and M33. मतलब means you have to find the minor of each element. There are the 9 elements, so you have to find the minor of 9 elements. So in this way you have to find the cofactor of M11. If you are M1 cofactor of M11, the cofactor of M11 means you have to write it -1 to power 1 + 1 M11 and put the value of M11. So M11 is given 4 and this sign will be the positive, so the value of M11 not
m11 is given 11, m11 is given 11 and this sign is positive, and if you multiply the 11 with positive sign then you get the 11. Similarly m12 a12 minus 1 power 1 plus 2 m12, and the value of the m12 is 6, and the sign of the minus 1 power 3, that will be the sign negative, so you have to write the a12 is equal to minus 6. Similarly cofactor of a13, that is 3, cofactor of a21 4, a22 is equal to 2, and a23 is equal to minus 1. So in the same way you have to find the cofactor of each element. कोफैक्टर में हम साइन का केयर करेंगे और माइनर में हम साइन का केयर नहीं करेंगे. वहाँ पे डायरेक्ट हम पहले माइनर बनाएंगे और माइनर में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर थर्ड ऑर्डर का है तो जो माइनर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा और उसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम इवैल्यूएट. अभी तक हम जो है पढ़ रहे थे जो एक्सपेंड करके किसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते थे या बाय प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते थे. तो एक मेथड और भी है जो हम उस मेथड से भी किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं. क्या उसमें कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट का यूज करके हमको इस डिटरमिनेंट्स को इवैल्यूएट करना, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपेंड करना. तो बाय दिस पे अगर हम लिखते हैं थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई है. थर्ड कॉलम इज दिस इज द C1, C2 एंड C3. अब C3 के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे. तो C3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लेकर चलेंगे तो ये A11 है, A12 है और ये 13 है. 13 मतलब कोफैक्टर ऑफ A13 लेके चलेंगे तो इस तरह से ये कॉलम और ये रोल डिलीट होगा. तो बचेगा क्या, 1 y 1 z बचेगा और माइनस पे पावर क्या लगाएंगे 1 + 3, क्योंकि हम जो इसका इंडेक्स है 1 3 का वो क्या है 1 और 3 है. तो हम क्या लिखेंगे 13 मतलब 1 + 3. तो इस तरह से क्या बनेगा जो है इसका ये साइन पॉजिटिव हुआ और इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × z माइनस 1 × y यानी z माइनस y, और z माइनस y क्या है पॉजिटिव. सिमिलरली A23 निकालेंगे तो दिस इज द ZX है, ZX से करस्पॉन्ड लेके चलना है, यानी कि ZX ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा. तो बचेगा क्या 1x 1 z और इसके अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स लेके चलेंगे A23. तो क्या आएगा माइनस पे पावर 2 + 3 और माइनस पावर अगर 2 + 3 दिया तो दैट विल बी साइन नेगेटिव. And if you are simplifying this determinant 1 × z, that is z, and minus 1 × x, so z minus x. So it means the value of A23 is equal to minus z minus x. You can write it minus z minus x or x minus z. Similarly, you have to find the third element मीन्स जेड वाई एक्स वाई. अगर हम इस एक्स वाई के साथ इस कॉलम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा 1x 1y, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका साइन अगर देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस पावर 3 + 3 मीन पॉजिटिव, साइन 6 बनेगा जो कि एक इवन नंबर है. अगर माइनस पावर इवन नंबर आता है माइनस पावर इवन तो साइन क्या बनेगा पॉजिटिव, और माइनस पावर अगर आड आता है तो साइन क्या बनता है नेगेटिव. तो इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है साइन पॉजिटिव आएगा. और अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 1 × y माइनस 1 × x दैट इज़ y माइनस x. तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर ऑफ C3 मीन्स कि YZ, ZX और XY का कोफैक्टर फाइंड कर लिया. और उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. यानी अगर हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट मीन्स ये कोफैक्टर 13 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है A13 है. ए प्लस फिर सिमिलरली A23 फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A23 विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A23. सिमिलरली A33 विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ
A33 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो है इसको कॉमन वगैरह लेकर के जो है इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स. So this is the another method by which you can expand the determinant by using the cofactor. Question number 5. In question number 5, this is the determinant is given and aij is the cofactor of aij, then the value of determinant is now. So you have to check it which is the true or which is the false. So as you know, the sum of the product of elements of row or column with corresponding cofactor जो साथ दिया रहेगा वो क्या होगा उसमें वो राइट होगा. इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो ऑप्शन गिवन है उसमें A11 जो A11 है फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर है. ऐसे A21 इसके साथ कोफैक्टर का जो है A21 है प्लस A31 थर्ड एलिमेंट है तो इसके साथ भी कोफैक्टर का थर्ड एलिमेंट है. तो इस तरह सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर गिवन है. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 5 दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4.6.